Okay. So in the last class, we studied about the Indian mountainous region, including Himalayas. Okay. So last class में Himalayas और उसके related Great Himalayas, Lesser Himalayas जो भी हैं वो सभी हमने पढ़ा है. हाँ, और पेनिनसुलर माउंटेन्स के बारे में भी पढ़ा, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, हाँ, नीलगिरी हिल्स के रिलेटेड सभी कुछ पढ़ा है. तो so now we'll go with the plains, plains of India. The plains. The plains of India. So, to the end of the Himalayas and to the north of the peninsular region. ठीक है, यहाँ तक Himalayan portion हो गया. Right. एक मिनट. ओके. ये वाला पोर्शन यहाँ तक माउंटेनियस रीजन कंप्लीट हो गया. फिर यहाँ से है ना प्लेन स्टार्ट होता है. फ्रॉम दिस साइड द प्लेन्स हैज बीन स्टार्टेड टिल दिस पोर्शन. ओके, यहाँ से पेनिनसुलर रीजन स्टार्ट, डेक्कन प्लेटो रीजन. So this is the plain region of India. So this plain region, it is the biggest fertile region in the Indian continent. So India में क्या है, सबसे biggest fertile ಫಲವತ್ತಾದ ಮಣ್ಣು ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು. So this is the biggest fertile region of India and it is drained by various rivers. So यहाँ पे क्या है, बहुत सारे big rivers flow होते हैं. So this is the region where the biggest rivers have been flowed. So what are those rivers? So the river is Indus. Number 2 is Ganga. And number 3 is Brahmaputra. Okay. So जो Indus river है ये यहाँ से ही चली जाती है. Okay. So this portion has been covered. But उसके जो छोटे-छोटे tributaries हैं, they'll come inside. But entire region is drained by Ganga and Brahmaputra river to the major extent. Okay. So entire region has been drained. ये सभी area क्या है, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रीजन से ड्रेन होता है. यहाँ पे सारे रिवर्स वही फ्लो होते हैं. इट मे बी ट्रिब्यूटरीज, उपनदी ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಮೇನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ and these forms, river system has been formed the vast delta in the world. ये क्या है, वर्ल्ड में एक सबसे बड़ा डेल्टा तरह, डेल्टा में नदियां भूखज भूमि जो बोलते हैं ना, वो वाला फॉर्म होता है. ओके, सो इस एरिया में. उसके बाद नेक्स्ट, this area has a very fertile and alluvial soil. Apart from this area comes under desert land, ಮರುಭೂಮಿ. ಹೌದಲ್ಲ, Thar desert is here. Okay, this portion comes under the Thar desert. So क्या है, वेस्ट साइड में थार डेजर्ट आ गया. फिर बचा हुआ ये वाला पोर्शन जो है, एंटायर रीजन इज ड्रेन्ड बाय इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर. फर्टाइल लैंड, मेजर एग्रीकल्चर लैंड. ओके, civilizations in India have been formed through this major river sides. Okay, so this is for the main plain region of India. Okay, then इतना ही इसके बारे में. Okay, the next one is peninsular region. So peninsular region क्या है? This is what the Deccan Plateau region or पर्याय द्वीप. So or Deccan Trap of India. So Deccan Trap of India का base क्या है? North में है. So this is the north portion of Deccan Trap. And here this is the south portion. It is always in a triangle. Okay, it is in a triangle shape. Here the plain boundaries will be there. India का जो great plain है
इसके नॉर्थ में आएगा. दिस इज द बेस, नॉर्थन पोर्शन, एंड eastern and western ghats. This is the western ghat and this part is the eastern ghat. So both the eastern and western ghat, ಪಶ್ಚಿಮ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಘಟ್ಟಗಳದಿಂದ ಇದೇನಿದೆ surrounded ಆಗಿದೆ. This portion has been surrounded by eastern and western ghat region. So it looks like a triangle shape. Okay, then and it is formed by, one is what do you call it? Igneous rocks. Igneous rocks, I will tell you. Igneous rocks. Igneous rocks means the rocks which has been formed by the volcanic eruption. ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯಿಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಶಿಲೆಗಳು. It is in a black color. Because of that, the entire Deccan Trap is having black soil. Okay, so यहाँ पे एरिया क्या है, सभी ज्वालामुखी आतिशफिशियल से क्या है फॉर्म हुआ है. So entire region is formed by the igneous rocks. Then it has a black color, triangular in shape. Okay, then and which type of rivers are flowing? We know because already we have studied that Krishna, Kaveri, and there and Mahanadi, Krishna, Kaveri. These rivers are flowing in this entire region along with its tributaries. ಅದರದ ಉಪನದಿ ಜೊತೆಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಏರಿಯಾ ಡ್ರೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ರಿವರ್ಸ್ ಇಂದ. Okay, so here we have, it is the largest plateau of India. ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟೋ ರೀಜನ್, ಪ್ರಸ್ಥ ಭೂಮಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಕ್ಕನ್ ಪ್ಲಾಟೋ. ಡೆಕ್ಕನ್ ಪ್ಲಾಟೋ ಇಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಟೋ. ಇದ್ ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ಲಾಟೋಸ್ ಇದಾವೆ, ಪ್ರಸ್ಥ ಭೂಮಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದಾವೆ. ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಛೋಟಾ ನಾಗ್ಪುರ್ ಪ್ಲಾಟೋ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ಲಾಟೋಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ವಿಂಧ್ಯ ಪ್ಲಾಟೋಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಮಾಲ್ವಾ ಪ್ಲಾಟೋ ಇಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ಥ ಭೂಮಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಕ್ಕನ್ ಟ್ರಾಪ್ or ಡೆಕ್ಕನ್ ಪ್ಲಾಟೋ or peninsular region of India. Okay, then so now apart from this, we'll see about the islands. Now islands will be here this side. Okay, so and this side here also. Now we'll have some islands of India. Dvipagalu, islands of India. So now, so how many islands are there in India? So first we'll see that already we discussed. ನಾವು ಮೊದಲೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಇಂಡಿಯಾದ ಕೋಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಕೋಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಎಂಟೈರ್ till Gujarat, from starting from Gujarat to till West Bengal. The length of the coastline is 7,516 kilometers. So in that entire coastline, Gujarat has highest coastline. Okay, Gujarat is the longest coastline, has the longest coastline. Apart from this, next is Andhra Pradesh, this side. Okay, so in that region we have many islands. How many islands we have entire region? 248 islands are there in Indian territorial limit. जो इंडिया के अंदर आते हैं areas, Andaman, Nicobar, Lakshadweep. So all these comes under the Indian territorial land. So Indian territorial land में कितने islands हैं in total? 248 islands are there. Okay, so in that islands, very famous is Andaman and Nicobar. Andaman and Nicobar. Nicobar Island is a group. It's a group. एक नहीं है single. It's a group. So in Andaman is the biggest island group. In Andaman Island group, we have 204 islands. ದ್ವೀಪಗಳು. So Andaman Deep ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ Andaman ದ್ವೀಪ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 204 ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಎಲ್ಲ
ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಮಿಡಲ್ ಅಂಡಮಾನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಮಿಡಲ್ ಅಂಡಮಾನ್ ಅಂತ ಒಂದು ದ್ವೀಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್. 204 ನಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಡಲ್ ಅಂಡಮಾನ್. ಓಕೆ, ಮಿಡಲ್ ಅಂಡಮಾನ್. ಓಕೆ, then next one is Saddle Peak. Saddle Peak ಅಂತ ಒಂದು ಪೀಕ್. ಅಂಡಮಾನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ರೀಜನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೌಂಟೇನ್. ಇನ್ ದಟ್ ಮೌಂಟೇನ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೀಕ್, ಉನ್ನತ ಶಿಖರ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂಡಮಾನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ, ಸ್ಯಾಡಲ್ ಪೀಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಶಿಖರ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೀಕ್ in the Andaman Island. Its height is 737 meters. Okay, height of this peak is 737 meters. Where it is? It is in northern part of Andaman Island. Okay, then comes to the second one is Nicobar Island. Nicobar Island. Okay, so Nicobar Island has only 19 islands. In that group, in Nicobar Island group, we have 19 islands. ದ್ವೀಪಗಳು. ಈ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 19 ದ್ವೀಪಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ. Okay, so in this the largest one is Nicobar Island only. The Great Nicobar is the Great Nicobar is the largest island. And Nicobar Island में क्या है? Almost all these islands have been formed by, most of them are volcanic in nature. Jwalamukhi. They are volcanic in nature. They all are volcanic in nature. And some islands में active, some are dead. क्या है इसमें? ನಿಕೋಬಾರ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್, ಇನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಅಂತ ದೊಡ್ಡವಾದ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ 19 ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಏನಿದಾವ ವೋಲ್ಕ್ಯಾನಿಕ್, ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯಿಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುವಂತ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದಾವ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಆರ್ ಆಕ್ಟಿವ್, ದೇ ಮೇ ಇರಪ್ಟ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್. ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಯಾವಾಗ್ಲೇನು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದಾವ. ಓಕೆ, ಇನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ volcanic islands ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, barren island. Okay, one is barren and Nicobar. Barren island is active. Active island in Nicobar is barren island. So ಇದು already erupt ಆಗಿದೆ, one time erupt ಆಗಿದೆ, ಇದು active ಇದೆ, and it can erupt at any time. Okay, so ಇದು ಯಾವಾಗ್ಲೇನು burst ಆಗ್ಬಹುದು or again active ಆಗ್ಬಹುದು. This is in a process of eruption. Eruption ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Okay, so the next one is Arabian Sea group. ಸೊ ಅರಾಬಿಯನ್ ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ್ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅರಾಬಿಯನ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ್ ಮತ್ತು ಮಿನಿಕಾಯ್, ನಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಇದು. ಅರಾಬಿಯನ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ್ ಅಂಡ್ ಮಿನಿಕಾಯ್ islands. So ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. So these are the islands of India. Either the region ಆಯ್ತು, mountainous region is completed, plain region is already completed, then this is the peninsular region, Paryaya Dweepa, then eastern and western Ghat is completed, then
this islands of India is also completed. Okay. So now we'll move with the rivers of India. Last time we studied about, in the previous classes, we studied about the rivers of Karnataka. Now we'll have some highlights about the rivers of India. So India have been drained by many rivers. Okay. Some rivers are originated. Okay. Some rivers are originated from Himalayas. Okay. And some rivers are originated in the Western Ghats. Peninsular rivers and Himalayan rivers. Okay. So Indian rivers have been divided into two parts. One is Himalayan rivers originated. They are originated in the Himalayan areas. Number two is peninsular, means Western Ghats. Peninsular rivers. This is from Western Ghats and this is from Himalayas. Okay. Two types of river system we can find in India. Okay. So now we'll go with the first one. What are the Himalayan rivers? The Himalayan river system, we have first one, Himalayan river system. In that, first one is Indus River. Indus River. So, Indus River system, what is the total length of the Indus River? It is 2,880 kilometers. Okay, entire total length of Indus River. But in India, its length is 709 kilometers. Okay, this is the total length. Okay, this is the total length. Okay, but in India it flows up to 709 kilometers. Okay, then where it rises, ಇದು ಎತ್ತಲೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. Where the origin point of this Indus River is Tibet. Tibet, it is there in China. Okay, near Manasarovar Lake. Manasarovar Lake, near. Okay, it originates in Tibet, which is there in China, nearby Manasarovar Lake. Okay, then the important tributaries to join the Indus River. ಇದರಲ್ಲಿ important tributaries ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. What are those? Jhelum, Chenab, Ravi, Satluj, Beas. Okay, these are the 5 important rivers of Indus River, main Indus River. Because of that, Punjab, we got the name Punjab. Punjab is a place where all 5 rivers can flow. Okay, that is what Panj, 5, Aab, water. 5 types of water are meeting at one place. That place is known as Punjab. Okay, then. So on Jhelum River, we have important cities. Now we'll go with the important cities. Where this, apart from this, we'll go first Jhelum. Jhelum River, where it originates, it is originating source place is Kashmir. Source place is Verinag. Verinag is a place where it is southeast of Kashmir. Okay. So Verinag anta ಒಂದು place, ಅದು southeast of Kashmir ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೇ Jhelum river ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. So this river can originate at a particular point. So where is Chenab? Chenab river, it originates as a place called
Lacha Pass. So, in the previous class, we talked about this passes, na? ಕಣಿವೆ ಮಾರ್ಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಬಾರಾ ಲಚ್ಚ ಪಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಬಾರಾ ಲಚ್ಚ ಕಣಿವೆ ಮಾರ್ಗ್ ನಲ್ಲಿ ಚೆನಾಬ್ ರಿವರ್ ಉತ್ಪತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ರಿವರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಒರಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. Where it is in Himachal Pradesh. Okay. Then next one is Ravi. So Ravi is a river which can take birth at a place called Kulu Hills. Kulu Hills. Where it is? It is in Himachal Pradesh. It is in Himachal Pradesh. Kulu Manali. These are the hill stations now. So in that Kulu is a hill where this Ravi river can take birth. It is in Himachal Pradesh. Okay. So now we'll go with the Beas. So this river takes place near Rohtak Pass. Rohtang Pass. Rohtang ಕಣಿವೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಉತ್ಪತ್ತಾಗುತ್ತೆ. This is also in Himachal Pradesh. Okay. So now is Satluj. Satluj river. So it is from Manasarovar. Manasarovar. Okay. So Manasarovar, it's a Rakkas lake. In Manasarovar, there is a Lakkas lake. Lakkas ಅಂತ ಒಂದು एक झील है जहाँ पे मानसरोवर में लक्कास बोलकर एक झील है. So it is in West Tibet. Okay. So these 5 rivers are tributaries. ಉಪನದಿಗಳು. ಯಾದರದು ಇಂಡಸ್ ರಿವರ್ ದ ಉಪನದಿಗಳು. ಎಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. So now we'll have one this thing. So what is this? Jhelum. So what are the important cities? Srinagar. Srinagar is an important city which is on the river of Jhelum. Jhelum river के ऊपर क्या है? Srinagar. Okay. Then we'll have Firozpur. Okay. And we'll have Firozpur. Firozpur and ये फिरोजपुर कहाँ पे आता है? It is also in Satluj. Satluj river. Okay. Then these are the important places. Okay. Punjab भी बोल सकते हैं. Punjab will be formed. Punjab मैंने बताया है 5 rivers जहाँ पे meet होते हैं. This is called a Punjab area. Okay. Then next we'll go with the Ganga river system. Okay. So we'll have Ganga river system. Ganga river system. Okay. So Ganga river system, the total length of the Ganga river is 2525 kilometers. Okay. And Ganga is divided into 2 streams. Ganga river is divided into 2 streams. Ganga divided into 2 streams. Where first one is Bhagirathi. And another one is Alaknanda. Okay, these are the 2 rivers which are flowing separately, continue to flow, and then they meet. These 2 rivers meet. It is flowing separately. Okay, and it is meeting at one place. Both the rivers.
That place is known as Devaprayag. Devaprayag. In that Devaprayag place, when these two rivers meet, it forms the Ganga river. Ganga. Okay. Then, before it joins with the Alaknanda at Devaprayag, so meeting with the Alaknanda river. ಸೊ ಭಗೀರಥಿ ಅಲಕ್ನಂದಾ ರಿವರ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಿವರ್ ಏನದು ಮಂದಾಕಿನಿ. ಮಂದಾಕಿನಿ river joins with Alaknanda and all these rivers are meeting at a place called Devaprayag where the Ganga rivers have been started. It starts flowing as a Ganga. Okay. Then Bhagirathi. So Bhagirathi starts from which region? Origin place कौन सा है Bhagirathi river? So Bhagirathi river source or origin place is Gaumukh. Gaumukh is a place where the Bhagirathi river takes its birth. Then number 2, Alaknanda. Alaknanda river can take its birth from Badrinath. Okay, these two places. And if you call about Mandakini river also I've told na. So Mandakini river, so it will take its birth from Kedarnath. When these all three rivers have been joining at the Devaprayag, then will form the Ganga river. Okay. Then, so where these all are? They all are from these Badrinath, Alaknanda, then Badrinath, Kedarnath, Gaumukh. All these places where it is, they are in Uttarakhand. Uttarakhand state. Okay. So all these places are in Uttarakhand state. Then, so Ganga has many tributaries. Ganga the ಏನಿದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉಪನದಿಗಳಾದವು. First one is important one is Yamuna. Yamuna is a Yamuna river. So its total length is 1375 kilometers. Length of the Yamuna river is 1375 kilometers. It is the most important tributary. So where it rises, ये कहाँ पे इसका जन्म होता है? So this Yamuna river takes its birth at Yamunotri. Yamunotri glacier. Yamunotri glacier means glacier ಹಿಮನದಿ. ಯಮುನೋತ್ರಿ ಅಂತ ಹಿಮನದಿಯಿಂದ ಇದರದ್ದು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಿದೆ? It is in Uttarakhand. Okay. So this is the Yamuna river. So Yamuna river joins with the Ganga river. It has to be joined. It's an important tributary. एक इसका extreme है, एक इसका उपनदी है. So this Yamuna river joins with the Ganga river where in Allahabad. Allahabad. It's a place called Allahabad. Okay. So यमुना नदी के भी बहुत सारे important tributaries हैं. Say for example चंबा, बेतवा, सिंध, केन, ऐसे बोल के बहुत सारे उपनदीज हैं. So आगरा, आगरा, Allahabad and Delhi ये important cities हैं. किसके ऊपर? यमुना नदी के ऊपर.
So यमुना नदी के ऊपर कौन से important cities है? Means these are the important cities where we can find the Allahabad, Agra and Delhi. These three important places are found in Yamuna river. Okay, on the banks of the Yamuna river. Okay, then apart from Yamuna river, we have many rivers. Ghagra river, Son river, Gandak river, Gomti river. So there are so many places. गोमती रिवर. सो गोमती रिवर के ऊपर कौन सा एक important place है? गोमती रिवर. On the banks of the Gomti river, we have a Lucknow, important city. हाँ बोलिए. इलाहाबाद. हाँ बोलिए. हेलो. हेलो मैम, अस्सलाम वालेकुम. हाँ बोलिए. वालेकुम सलाम. बोलिए. मैम इसका नोट्स मिल सकता है क्या मैडम, ज्योग्राफी का नोट्स? हाँ मैं भेजती हूँ आपको. वही मैंने मैसेज भी किया है उसमें. भेजूंगी करके मैं भेजती हूँ. हाँ मैडम. ओके मैं थोड़ा भेज दो मैडम, हेल्प करता है. ओके ओके भेजती हूँ. ओके. देन these are the important cities. Okay, then apart from this, इसके और बहुत सारे रिवर्स हैं. से फॉर एग्जांपल मैंने कुंती रिवर का एक पता है, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट सिटी लखनऊ है. ओके, सो दामोदर रिवर. हैव यू हर्ड अबाउट दामोदर रिवर? दामोदर रिवर. So Damodar river and Kosi river. There are two important rivers. Kosi river, tributaries of Ganga. Okay. So Damodar river has one name. What is that? Sorrow of Bengal. Sorrow of Bengal. ठीक है. दामोदर रिवर को सॉरो ऑफ बंगाल भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? फ्लड आता है वहां पे इस रिवर से. ओके, सो दामोदर रिवर इज कॉल्ड एज सॉरो ऑफ बंगाल. So like that, Kosi river is known as sorrow of Bihar. Okay, these two questions may be asked, and it has been asked in many other competitive examinations. So ये बहुत सारे competitive exams में पूछा गया है कि सौरव ऑफ बंगाल कौन से रिवर को कहते हैं और सौरव ऑफ बिहार कौन से रिवर को कहते हैं. So Kosi river is the sorrow of Bihar and Damodar river is the sorrow of Bengal. क्यों? Because of the flood. Okay, then next one is, we'll go with the next river system, Brahmaputra river system. Brahmaputra river system. Okay, so now Brahmaputra river system. The total length of this Brahmaputra river is total length of this Brahmaputra river is 2,900 kilometer. Okay, so where it rises, ये कहाँ पे जन्म लेती है? So this river has been taking its birth at Tibet. Tibet में इसका जन्म होता है. कहाँ पे? Chamayang Dung. Chamayang Dung is a glacier. Chamayang Dung बोलकर एक क्या है? एक हिमा नदी है. There is a glacier with a name called Chamayang Dung, which is at Tibet. Okay, so Tibet ನಲ್ಲಿ Chamayang Dung ಅಂತ ಒಂದು ಹಿಮ ನದಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲೇ ಏನಿದೆ? ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ರಿವರ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಜನ್ಮ ಆಗುತ್ತೆ. So this where it is called as the Sangpo. इस ग्लेशियर को वहां पे क्या बोलते हैं? Sangpo. T is silent. Sangpo. T is silent, just like a tsunami. Tsunami T से लिखते हैं, but T is silent. We call it as a tsunami. So like that, T, the Sangpo. So we read it as a Sangpo. Okay, it's a place. इस ग्लेशियर को Sangpo भी कहते हैं. Okay, so it enters in
इंडिया. सो ब्रह्मपुत्र इंडिया में कहाँ से एंटर होती है? इट एंटर्स इन इंडिया, enters in India from where? From Arunachal Pradesh. Arunachal Pradesh. So जब ये इंडिया में एंटर होती है अरुणाचल प्रदेश से, इसका नाम चेंज होता है. What is its name? Its name is दिहांग. ओके, ब्रह्मपुत्र का नेम दिहांग. कहाँ पर? जब इंडिया में अरुणाचल प्रदेश से अंदर आती है, एंटर होती है. So then we'll call it as a दिहांग. So now इसके भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं. इट टू हैव मैनी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज. फर्स्ट उपनदी और शाखे गढ़ताओ. सो ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में, सो इन बांग्लादेश ब्रह्मपुत्र इज आल्सो नोन एज जमुना. यमुना एंड जमुना बोथ आर डिफरेंट. ओके, इन बांग्लादेश दिस ब्रह्मपुत्र is known as Jamuna. Okay, Jamuna river. Okay. So वलगंगा इट्स नेम. फिर वहां पे क्या बोलते हैं गंगा को? फ्रॉम बांग्लादेश में. तो इन बांग्लादेश गंगा इज नोन एज पद्मा. Padma river. Okay. So this is what the name of the rivers in other countries. So गंगा एंड ब्रह्मपुत्र दोनों रिवर्स क्या है? एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाते हैं. डेल्टा, बिगेस्ट डेल्टा, द बिगेस्ट डेल्टा, नदीय मुखज भूमि. बिगेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड कौन सा है? बिगेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र डेल्टा. इसे क्या बोलते हैं हम? सुंदरबंस भी बोलते हैं. सुंदरबन डेल्टा. Okay, so Sundarban Delta is the world's biggest delta. ನದಿಯ ಮುಖಜ ಭೂಮಿ. So ಸುಂದರ್ಬನ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸುಂದರ್ಬನ್ ನದಿಯ ಮುಖಜ ಭೂಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸುಂದರ್ಬನ್ ಡೆಲ್ಟಾ. So it is formed by this Ganga and Brahmaputra river. Okay, formed by Ganga and Brahmaputra river. Okay, then one more thing in Brahmaputra river. This is an important. It has been asked in your previous examination. What is that? In Brahmaputra river, we have an island. Brahmaputra river के ऊपर क्या है? एक island है. Actually, river के ऊपर island बहुत कम होता है. So, on the rivers we have islands. Rare, in a rare condition we have islands, but in oceans we have many islands. Okay. So, on Brahmaputra river, we have one island that is called as River Island. River Island. कौन सा island है? मजूली. Majuli River Island. It is the biggest island in the world. Majuli Island ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर है, and it is the biggest island in the world. Biggest island in the world. Okay. So this is what the about the Brahmaputra river. So Brahmaputra river has one more name, Red River. Okay. ब्रह्मपुत्र का और एक नेम है Brahmaputra and Red River. Both the things. Okay. So this is about the
Brahmaputra rivers. So now we'll have one thing, peninsular rivers. So अभी हमने द ग्रेट प्लेन्स के रिवर्स के बारे में सोचा, पेनिनसुलर जो ट्रायंगल एरिया है, डेक्कन प्लेटो, हाँ यहाँ पे कौन कौन से रिवर बहते हैं. सो ऑलरेडी दैट वी हैव स्टडीड इन अबाउट व्हेन वी वर स्टडीइंग अबाउट कर्नाटका ज्योग्राफी. वही है, कौन से हैं? फर्स्ट वन इज महानदी है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी. ओके, सो इन दैट महानदी रिवर एक लिख लीजिए, ब्रह्मपुत्र रिवर्स के ऊपर कौन कौन से इंपॉर्टेंट cities हैं. Okay, so in Brahmaputra river we have important cities. Important cities are Dibrugarh, Tezpur, Guwahati, Jorhat and Dhubri. ये क्या है? सभी प्लेसेस आसाम में है. Okay, all places are at in Assam, and all these are the important cities which are on the banks of the river of Brahmaputra river. Okay, so next one is, we'll go with some other river system, peninsular river system. So in peninsular river system, peninsular river system. So peninsular river system, east flowing river. So in east flowing river we have Mahanadi. Mahanadi river. So Mahanadi river का total length कितना है? 858 kilometer. Okay, so Mahanadi river is a east flowing river, east में flow होती है. Okay, so it is total length is 858 kilometer. Where it rises, कहाँ पे इसका जन्म होता है? So it rises at Raipur district. Raipur district, Chhattisgarh. Okay, Raipur district of Chhattisgarh. Okay, then इसके ऊपर कौन कौन से important tributaries हैं? Sorry, कौन कौन से important cities हैं? इसके important cities on this river are Cuttack and Sambhalpur. Cuttack and Sambhalpur are the important cities. और एक क्या है, ये जो इंडस रिवर है उसके ऊपर इम्पोर्टेंट सिटीज, हड़प्पा, मोहनजोदारो, ये सब सिटीज वहां पे आते हैं. हाँ, लोथाल, ये महानदी के ऊपर कटक एंड संबलपुर. ओके, देन कम्स टू गोदावरी. गोदावरी इज नोन एज दक्षिण गंगा. गोदावरी रिवर, टोटल लेंथ 1465 किलोमीटर in India. It is called as वृद्ध गंगा. इसका और एक नाम है वृद्ध गंगा, दक्षिण गंगा. ओके, दक्षिण गंगा. So it's the longest river in the peninsular. So peninsular में बहने वाली सबसे बड़ी नदी गोदावरी रिवर. So it rises at नासिक. से मैं पहले बोल चुकी हूँ ऑलरेडी ये सब कुछ. ओके, तो नासिक में इम्पोर्टेंट प्लेस भी बताया मैंने. उसके बाद कृष्णा रिवर, ये शॉर्ट में बताती हूँ, ऑलरेडी मैंने बोला है, टाइम नहीं है इसलिए. कृष्णा रिवर 1327 किलोमीटर
total length 1327 kilometer, rises at Western Ghat, Mahabaleshwar. महाबलेश्वर में राइज होती है। इसके बाद इसके ऊपर आने वाले इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज, इसमें क्या है, इसके बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं, तुंगभद्रा, घटप्रभा, मलप्रभा, ऐसे बहुत सारे हैं। तो मूसी रिवर के ऊपर हैदराबाद है। मूसी रिवर के ऊपर कौन सा है? हैदराबाद। सो लाइक दैट क्या है, जैसे तुंगभद्रा के ऊपर करनौल है। मैंने बताया है ऑलरेडी, इसमें इंपॉर्टेंट सिटीज कौन से थे। मूसी रिवर चूक गया था, सो आई हैव टोल्ड इट हियर, हैदराबाद। सो करनौल वगैरह सभी तुंगभद्रा रिवर पे आता है। ओके, देन कावेरी, ये भी बताया मैंने ऑलरेडी। So this is also I have told 805 kilometer, okay, total length, and it has many tributaries. क्या है, बहुत सारे इसके उपनदी गड़े। It has many tributaries. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಉಪನದಿ ಗಳಿದಾವೆ. It also rises at Brahmagiri, at Western Ghats, okay, and सुवर्ण रेखा और एक रिवर है। इसके बाद सुवर्ण रेखा, इसका टोटल 395 किलोमीटर। ओके, देन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स देखिए, वेस्ट फ्लोइंग, ये भी हमने ऑलरेडी देखा है, बट इसमें इंपॉर्टेंट सिर्फ जो कर्नाटका में आते हैं उतना ही देखा है, बस यहाँ पे आप देखेंगे नर्मदा रिवर। वेस्ट फ्लोइंग रिवर में नर्मदा, सो अमरकंटक प्लेटो में इसका राइज होता है। इट राइजेस एट अमरकंटक प्लेटो, ओके, एंड इसके ऊपर इंपॉर्टेंट सिटी कौन सी है? जबलपुर। जबलपुर में एक वाटरफॉल भी है जो नर्मदा रिवर, वाटरफॉल धौंधार waterfall. It is at Jabalpur. It is on the river Narmada. Okay. Then west flowing river में second one है ताप्ती रिवर। ताप्ती रिवर, इसका टोटल लेंथ है, हाँ, नर्मदा का टोटल लेंथ, नर्मदा रिवर का टोटल लेंथ कितना है? 1057 किलोमीटर। ओके, ताप्ती रिवर का टोटल लेंथ 724 किलोमीटर। कहाँ पे राइज होती है? इट राइजेस एट बैतूल, बैतूल डिस्ट्रिक्ट, वेयर इट इज इन मध्य प्रदेश, MP. ಇದು बैतूल ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದು ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ। ಇದು ಎಲ್ಲಿದೆ? ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ। ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ವಿನ್ ಆಫ್ ನರ್ಮದಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ। ट्विन रिवर ऑफ नर्मदा, जुड़वा, नर्मदा की जुड़वा नदी कहते हैं इसको, ट्विन रिवर ऑफ नर्मदा। ताप्ती रिवर के ऊपर कौन सी इंपॉर्टेंट सिटी है? सूरत। इंपॉर्टेंट सिटी इज ए सूरत। ओके, देन ऐसे क्या है, साबरमती रिवर है, माही रिवर है, लूनी रिवर है, ऐसे बहुत सारे रिवर्स हैं जो वेस्ट फ्लोइंग होते हैं। सो इसमें क्या है, एक लूनी रिवर आती है। सो लूनी रिवर का टोटल लेंथ 450 किलोमीटर लेंथ,
and it rises at Aravallis. Aravali is the oldest mountain in India. Okay, Aravallis. इसको क्या बोलते हैं? Salt lake, salt river, salt river. Okay, लूनी river को salt river भी बोलते हैं. देन शरावती रिवर भी है, जिसके ऊपर जोग फॉल्स है, महात्मा गांधी फॉल्स है. ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ओके, सो नाउ अभी क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे इसमें क्या है. जो लार्जेस्ट मैन मेड लेक, लार्जेस्ट मैन मेड लेक, जो इंसान की बनाई हुई लेक, सबसे बड़ी लेक, झील. द इम्पोर्टेंट largest man-made lake is in India is Indira Sagar Lake. Indira Sagar Lake. Okay. So इसके पास क्या है, which is this reservoir of सरदार सरोवर प्रोजेक्ट सुना होगा. तो उसके रिजर्वायर एक मैन मेड लेक बनाई गई है. Okay. So on that reservoir, सरदार सरोवर लेक reservoir, so this Indira Sagar Lake is there. It is the largest man-made lake. Where it is? It is at Gujarat. It is nearby this project. Nearby this project, ना? So Gujarat and मध्य प्रदेश के पास ये प्रोजेक्ट है. तो उस प्रोजेक्ट के nearby गुजरात एंड मध्य प्रदेश, MP, वहां पे क्या है, सरदार सरोवर लेक और प्रोजेक्ट. इस प्रोजेक्ट के नियर बाय ये इंदिरा सागर लेक है. ओके, देन छिलका लेक. ये भी क्वेश्चन आया था आपको. छिलका लेक, वेयर इट इज? छिलका लेक क्या है, ओडिशा में है. छिलका लेक इज एट ओडिशा. हाँ, तो ये क्या है, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है. सॉल्ट वाटर लेक, सबसे बड़े खारे पानी की झील, सॉल्ट वाटर लेक. ये इंडिया की सबसे बड़ी लेक है. बिगेस्ट लेक इन इंडिया, छिलका लेक. ओके, देन और एक लेक है, ओलार लेक. ओके, सो ओलार लेक कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में. ओके, सो इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक. लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक. छिलका लेक क्या है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील. ओलार लेक क्या है, जो जम्मू एंड कश्मीर में है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक. ओके, तो ओलार लेक के बाद और एक लेक क्या है, डल लेक. डल झील सुना होगा. डल लेक इज आल्सो इन जम्मू एंड कश्मीर. ओके, देन और भी बहुत सारे लेक हैं, जो क्या है, केरला में है, आंध्र प्रदेश में है. ऐसे बहुत सारे लेक्स हैं. ओके, और टाइडल एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स, जो लहरों से इलेक्ट्रिसिटी या कुछ एनर्जी रेडी करते हैं, टाइड्स से. ओके, सो टाइडल एनर्जी can be for highest from Gulf of Kutch. Gulf of Kutch. Gulf of Kutch क्या है? This is the Kolli. Kutch Kolli in the in Matararo.
ಟೈಡಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಆಫ್ ಟೈಡಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಗಲ್ಫ್ ಆಫ್ ಕಚ್ ನಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಿದೆ? ಅದು ವೆಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಗುಜರಾತ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ವೆಸ್ಟ್ ಗುಜರಾತ್. Okay, this is nearby West Gujarat. Okay, so this is the important questions that may comes in your examination. Sir, I think I'm going to stop now. Yes, madam. Thank you very much. Fazal sir, जिनकी next class है, he has also joined in. हाँ, So okay sir. he will start the class. Okay, sir, मेरा Okay. फिर अभी क्लास आप फ्राइडे ही रखिए. मैं बेंगलोर जा रही हूँ. अभी शाम में हाँ, बेंगलोर निकल रही No problem. Friday schedule क्यों आपका class? हूँ. जी सर, जी. Okay, thank you sir. Okay. Thank you, ma'am. Assalamu alaikum, Dr. Fazal sir. Assalamu alaikum sir. हाँ, वालेकुम सलाम। हाँ सर, आप हाँ जी। पीपीटी प्रेजेंटेशन वगैरह कुछ कर रहे हैं क्या सर? हाँ, वही आप जो दिए थे ना, वही पीपीटी कर रहा हूँ। मैं आपको ये बना देता हूँ, को होस्ट बना देता हूँ, तो आपको राइट मिल जाएगा प्रेजेंटेशन करने के लिए, स्क्रीन शेयरिंग के लिए। ठीक ठीक। हाँ, ओके, यू कैन स्टार्ट सर। आप अपना इंट्रोडक्शन देके स्टार्ट कर सकते हैं। जी। ओके, शुक्रिया सर। Assalamu alaikum. Good evening, everybody. I'm Dr. Walaikum Fazal salam, sir. Gehlot. जी, I'm Dr. Fazal Gehlot. I'm associate professor in the Department of Anatomy at KIMS Hubli. तो मेरा स्पेशलाइजेशन MBBS MD in Anatomy है, जो कि प्योरली टीचिंग ये है, which deals with the structure and function of human body. तो मैं ज़्यादातर तो मेरे सब्जेक्ट ही कवर करूंगा. इन बिटवीन बायोकेमिस्ट्री वगैरह है तो प्रोबेबली आई मे नॉट बी एबल टू डू इट. विल सी लेटर ऑन दैट. तो ये मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन है. मैं तो स्टार्ट करेंगे सर. जी सर, यू कैन स्टार्ट सर. यस. स्क्रीन दिख रहा है ना सर? स्क्रीन दिख रहा है? हाँ हाँ, सर, दिख रहा है सर, दिख रहा है. हाँ, चलो स्टार्ट कर लेंगे. चलो. तो सब्जेक्ट मेरा बायोलॉजी है. तो इन सिंपलेस्ट वे हम पहले से भी देखते आ रहे हैं. बायोलॉजी ऑलमोस्ट हमारे स्कूल के इससे पढ़ रहे हैं. तो एग्जैक्टली कैसे डिफाइन करेंगे? तो यहाँ पर एक सिंपल डेफिनेशन है. इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ, हेंस इट्स कॉल्ड अ लाइफ साइंस. ठीक है. तो और एक हमारे उस्ताद आराम से इतना सिंपल डेफिनेशन बोल रहे कि इट्स अ स्टडी ऑफ लाइफ अराउंड अस. तो उसमें एवरीथिंग इट इंक्लूड्स. तो प्लांट्स भी है, एनिमल्स भी है, एवरीथिंग. सो विद दैट इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ. यानी कि जिंदगी के बारे में स्टडी करना, जो लिविंग क्रिएचर्स के बारे में स्टडी करना, उसे बायोलॉजी कहते हैं. तो इन ब्रीफ उसे लाइफ साइंस भी कहा जाता है. अच्छा, तो ये जो टर्म जो है बायोलॉजी, इसमें इस दो साइंटिस्ट ने इसे बनाया. उनका नाम है लामार्क एंड ट्रेविरेनस इन द ईयर 1802. तो इसमें आपको जो है एक आ सकता है हु कॉइन्ड द वर्ड बायोलॉजी. उसमें 4 ऑप्शंस आ सकते हैं. तो उसमें जो है आपको ये लिखना है
Lamarck and Treviranus in the year 1802 were the ones who coined biology. तो अच्छा, एक बार कॉइन करने के बाद अब क्या है बायोलॉजी? इट्स अ स्टडी ऑफ लिविंग क्रिएचर्स सराउंडिंग अस, isn't it? The living creatures में even plants is also a living creature, animal is also a living creature. तो इतना वास्ट होने के बाद फिर अब उसे फिर से आगे एक सब डिविजन करना पड़ता है ताकि वी कैन एग्जैक्टली विल कम टू नो द टॉपिक एंड ऑल. तो इतना वास्ट ये है बायोलॉजी, तो उसे इस वास्ट को उसे फिर सिंप्लीफाई करने की कोशिश की गई. कैसे? वही लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी लिविंग क्रिएचर है, उनके रिलेशनशिप दूसरे लिविंग क्रिएचर से कैसे हैं और दूसरे नॉन लिविंग क्रिएचर से कैसे हैं. तो उस बेसिस पे उनको जो है फिर से डिवीजन किया गया. किसे? बायोलॉजी को. तो उस डिवीजन के अंदर आता है अगेन देयर आर टू सब डिविजन्स, बॉटनी एंड जूलॉजी. तो बायोलॉजी को फिर से डिवाइड कर दिए बॉटनी एंड जूलॉजी. तो अगर आप बॉटनी कहेंगे तो डायरेक्टली विल कम टू नो व्हाट इज इट. लाइक फॉर एग्जांपल अभी मैं ये बताता हूँ कि बॉटनी क्या है. बॉटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स. प्लांट की जो हम स्टडी करते हैं तो उसे बॉटनी कहते हैं. आप कहेंगे कि प्लांट्स में लाइफ है, डेफिनेटली लाइफ है, तो इसलिए ये भी एक पार्ट ऑफ बायोलॉजी है. तो प्लांट की स्टडी को बॉटनी कहते हैं और एनिमल्स की स्टडी, उसमें हम भी आ गए हैं, उसे जूलॉजी कहते हैं. एनिमल्स की स्टडी को जूलॉजी. तो एक तो हो गया बॉटनी, स्टडी ऑफ प्लांट्स, एंड एक हो गया जूलॉजी, स्टडी ऑफ एनिमल्स. तो अगेन बायोलॉजी को इस तरह से डिवीजन किया गया है. ओके, नाउ अगेन वन मोर क्वेश्चन will arise, that who is the father of biology? The person who invented the study of biology, who is the father of biology? तो उससे जो है हम कहेंगे एरिस्टोटल is known as the father of biology. यहाँ पर भी आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, name the father of biology. उसमें again you will get 4 options. One option is Aristotle. तो ध्यान रखिए, एरिस्टोटल being the father of biology. ठीक है. अच्छा, ये बायोलॉजी जो है, अगर बेसिक यूनिट अगर हम देखेंगे, क्या है बेसिक यूनिट? उसमें सब में बेसिक थिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो है वो है सेल. अच्छा, सेल क्या है? इन अ क्लियर डेफिनेशन, इट्स द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी. बगैर सेल के तो लाइफ का एग्जिस्टेंस ही नहीं है. तो हर चीज जो बनी हुई है ये सेल से. हम देखते आ रहे हैं, हम 8th स्टैंडर्ड से, इनफैक्ट 7th स्टैंडर्ड से हम पढ़ते आ रहे हैं कि सेल क्या है. तो बीइंग अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ बॉडी. नाउ हियर ये फिगर आप जो देख रहे हैं इस सेल का, इसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हु हैज टर्म्ड सेल, किसने ये इजाद किया? तो यू कैन टेल रॉबर्ट हुक इन द ईयर 1665. तो ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है. The term cell is derived from the Latin word and was first observed by a scientist named Robert Hooke. तो रॉबर्ट हुक ने in the year 1665 में टर्म किया था ये, और you can tell invented the term cell. Okay. Now ये सेल अगर आप देखेंगे तो इसमें इतने सारे अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स है. यस, ऑर्गेनेल्स है. उसमें सेंटर में न्यूक्लियस है. Then you can see mitochondria, you can see ribosomes, isn't it? You can see smooth endoplasmic reticulum. All these is comprising of a cell. Okay. So now धीरे धीरे देखेंगे कि ये क्या है. तो again we come back to the Robert Hooke. इसमें उसने ये देखा, रॉबर्ट हुक ने, कि एक माइक्रोस्कोप के अंदर उसे एकदम जो है चेम्बर्स मिले, टाइनी चेम्बर्स, इतने छोटे छोटे चेम्बर्स. उस चेम्बर को उन्होंने सेल बोल के बनाया. तो एकदम उस वक्त तो माइक्रोस्कोप इतना एडवांस नहीं था, अंदर की चीजें तो नहीं दिखाई दे रही थी, तो जस्ट एक स्पेस नजर आता, एक चेम्बर नजर आ रहे थे. तो उस चेम्बर, तो उन्होंने उस पर एक टर्म कॉइन किया है, सेल. ओके, रॉबर्ट हुक इन द ईयर 1665. अच्छा, ठीक है. अब इसमें जो है, अब बोलेंगे कि अगेन वी आर एबल टू सी समथिंग एल्स.
like Leeuwenhoek is commonly known as father of microbiology and considered to be the first microbiologist. अच्छा, इसमें जो है माइक्रोबायोलॉजी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये माइक्रो क्या है? माइक्रो वो चीज है जो हम आंख से हम देख नहीं सकते, आंख से हमको दिखाई नहीं देगी, वो वी कांट सी विद द नेकेड आई। तो इसलिए हमको एक आइदर माइक्रोस्कोप यूज करना है, तब ही उस चीज को माइक्रो कहा जाता है। ओके, बायोलॉजी अगेन द स्टडी ऑफ द लिविंग क्रिएचर्स। तो इसमें जो है माइक्रो यानी कि इतनी स्मॉल which can be seen only with the help of microscope। माइक्रोस्कोप के जरिए से ही हम उसे देख सकते हैं, और वो उस फील्ड को कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। आजकल तो उसका बहुत ये चल रहा है चर्चा, लाइक कोरोना वायरस, वो भी एक वायरस है, ठीक है, इतना छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, क्या हम देख सकते हैं उसे नेकेड आई से? नहीं देख सकते। सो दैट फील्ड इज अंडर माइक्रोबायोलॉजी। बैक्टीरिया है, हम देखते हैं कि कॉलरा वायरस है, देन कई बैक्टीरिया जो है, ट्यूबरकुलोसिस का एक बैक्टीरिया है, ये कई एग्जांपल्स हैं। तो इन सब चीज को देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। सो दैट फील्ड इज माइक्रोबायोलॉजी। उस माइक्रोबायोलॉजी को लीवेनहुक, जिन्होंने, उन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है, और जिन्होंने माइक्रोस्कोप इजाद की थी, एंटोन वैन लीवेनहुक। तो ये भी एक आपको एक सवाल आ सकता है, हु इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी? वो भी एक है। एंड यू कैन टेल द इन्वेंशन ऑफ हिम ऑफ अ माइक्रोस्कोप, दैट इज लीवेनहुक। ओके, माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया हुआ लीवेन। नेक्स्ट, अब इसमें जो है बहुत टाइप के सेल्स मिलते हैं। अच्छा, तो जस्ट टू क्रिएट एन इंटरेस्ट, ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स। ओके, एक एवरेज सेल कितने होते हैं हमारी बॉडी में? एवरेज पूरी बॉडी सेल से बनी हुई है, isn't it? When you grip the cell, that is called tissue। तो ये जो है एक अप्रोक्सीमेट, यानी कि नॉट एग्जैक्ट फिगर, अप्रोक्सीमेटली ह्यूमन बॉडी जो है 30 ट्रिलियन सेल से बनी है। 30 ट्रिलियन सेल्स। तो अब कितने जीरोस आ गए? उसमें जो है 13 जीरोस आते हैं। 3 and you put 13 zeros, that forms the 30 trillion। So human body, so इतने सेल्स मिलकर जो है हमारी बॉडी बनती है, ठीक है। तो हर सेल का इतना ये, उसमें जो है कंटेंट एक रहता है, पर्टिकुलर सेल के पर्टिकुलर कंटेंट रहते हैं, कॉमन सेल के कॉमन कंटेंट रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है ह्यूमन बॉडी, इनफैक्ट आप प्लांट्स भी लेंगे तो वो भी सेल से बने हुए हैं। तो क्यों चाहिए हमें सेल? सिंपल थिंग इज कंट्रोल करना और सेवरल फंक्शंस को अदा करना, which is here you can see here, a cell is a basic unit of life which is able to control and perform several function। कई functions वो ये perform कर सकते हैं, तो वो बना सकते हैं, कई functions ये कर सकते हैं, तो उसे जो है सेल कहते हैं, ठीक है, उसका जो है फंक्शन। नाउ इसमें जो है क्या दिया हुआ है, क्या है ये सेल? एक तो काफी बड़ा सेल है, जो फीमेल ओवरी एक ऑर्गन होता है, ओवरी एक ऑर्गन, उसमें से जो रिलीज होता है, दैट इज कॉल्ड ओवम। तो वो तो ह्यूमन बॉडी का द लार्जेस्ट सेल है। यू मे गेट अ क्वेश्चन ऑन द लार्जेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज ए ओवम, while the smallest cell of the human body is sperm, जो कि मेल में रहता है, वो जो है काफी स्मॉल सेल रहता है। ओके, सो द लार्जेस्ट सेल you can see as well as the smallest cell is a sperm। now उसमें largest and longest में कंफ्यूज मत करिए, जो लेंथ जो है सबसे बड़ा जो सेल है वो है नर्व सेल, that is nerve। अच्छा, why it is so longest? connecting from the cell to the periphery। अगर मैं कहूँ सेल फ्रॉम द सेल टू द पेरिफेरी, तो इसका क्या मतलब? फ्रॉम द ब्रेन टू द पेरिफेरी। तो यहाँ पर एक इतना लंबा सेल होता है जिसे न्यूरॉन कहते हैं। आप देख सकते हैं ये डायग्राम में, ये देखिए यहाँ पर न्यूक्लियस है, द सेल बॉडीज है, एज वेल एज एक लंबा सा एक्सॉन आपको दिखाई देगा, पूरा एक लंबा एक्सॉन उसे दिखाई देगा। तो टोटली इस लॉन्गेस्ट सेल को कहा जाता है न्यूरॉन, ठीक है। तो ये जो है दिस इज वेयर इट इज प्रेजेंट इन द ब्रेन, फ्रॉम द ब्रेन टू द पेरिफेरी।
नाउ पेरिफेरी का मतलब जो है टिल द टिप ऑफ द स्किन। तो इसका फंक्शन जो है, जस्ट टू क्रिएट एन इंटरेस्ट, आई एम टेलिंग, इट मे नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर यू। तो इसका फंक्शन है फॉर एग्जांपल सेंसेशन। आप कहीं जा रहे हैं और कहीं बैठे हुए हैं एंड यू टच फायर, ओके, तो इमीडिएटली यू विल कम टू नो दैट हाउ इट इज पॉसिबल। इट सेंड्स इम्पल्सेस, यहाँ से इम्पल्स सेंड होता है कहाँ पर, ब्रेन। देन फिर ब्रेन विल टेल द पर्टिकुलर सेल दैट यू आर टचिंग द फायर, ओके, एंड देन इमीडिएटली यू रिमूव द हैंड, isn't it? So ये sensation जो होता है, this is carried out by this such a long fantastic cell, उसे nerve cell कहते हैं, and it's all within seconds, a fraction of seconds, इतना fast impulse जाता है। तो उसे longest cell को क्या कहते हैं, is a neuron कहते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं इसके parts, एक तो nerve cell है, तो उसमें देखिए आपको सेल बॉडीज दिखते हैं, आपको एक्सॉन्स दिखते हैं, न्यूक्लियस, ओके, एंड ये लंबा जो ये शीट टाइप होता है, ये एक्सॉन विद द माइलिन शेप, ओके। नाउ तो ये जो है नॉर्मल जो एग जो दिखता है उसकी ये डायग्राम है, विल नॉट गो इन मच ऑफ इट। अच्छा, इधर जो है अगेन देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स, वन इज प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्राइमरली दो टाइप होते हैं इंसान में जो है, इन एनिमल्स एंड ऑल इट्स मोस्टली यूकैरियोटिक सेल्स। इसका फर्क जो है विल नॉट गो मच इन डिटेल, बट मोटी मोटी बात ये कह दूं कि जो सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं, से फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, लाइसोसोम्स है, वो सब चीज प्रोकैरियोटिक में नहीं रहते हैं, उसमें मिसिंग रहता है प्रोकैरियोटिक, बट यू विल गेट इन यूकैरियोटिक्स। सो दिस इज सम ऑफ द डिफरेंस। प्रोकैरियोटिक जो है वो प्रिमिटिव स्टेज है एंड यूकैरियोटिक विद अ लेटर स्टेज है। तो मोटी बात कहूं एकदम सिंपल डेफिनेशन में, तो ऑर्गेनल्स बहुत जो जिस सेल्स में कम रहते हैं, टेक फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस, टेक फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, वो सेल्स जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स कहा जाता है, और जिसमें ये सब ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं उसे यूकैरियोटिक सेल्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस बिटवीन द टू। नाउ हियर इसमें छोटा सा एक डायग्राम दिया हुआ है, यू कैन सी द सेल, you can see the capsule, the cell wall, the cell membrane, the ribosomes, etc. हर सेल में जरूरी नहीं कि जो भी दिखाया गया है वो हर सेल में मौजूद है, पर्टिकुलर सेल्स के पर्टिकुलर फंक्शंस होते हैं, तो वो जो कंट्रोल करता है, इट एबल टू परफॉर्म सेवरल फंक्शंस, isn't it? So particular part is present in particular cells whereas it is absent in other cells, like for example capsule। अब ये देखिए आउटर कवरिंग जो है उसे कैप्सूल कहते हैं। किस चीज से बना है, ये एक पॉलीसैकेराइड से बना है, ठीक है। अच्छा, इसका क्या फंक्शन है, आराम से इट स्टिक्स विद द अदर सेल्स। नाउ सेल टू सेल कनेक्शन होता है, उसमें चैनल्स होते हैं, तो एक सेल को अगर खाना मिल जाता है तो इट कैन इजीली पास ऑन टू द अदर सेल्स, सो इट इज बाय द कैप्सूल। तो उसमें जो है दिस व्हाट इट डज, इट वर्क्स एज अ फूड रिजर्व, ठीक है, इट वर्क्स एज अ फूड रिजर्व as well as it protects the cell from dryness as well as from chemicals. So in other words, you can tell the cell is capsule is acting as a protective in nature, okay, it acts to protect the cell. Now again the same thing, cell wall, कोई difference ज्यादा नहीं है, capsule भी रहता है, underneath you may or you may not get cell, okay, then this is also made up of a glycoprotein। क्या फंक्शन है, इट गिव्स स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी टू द सेल, मींस इट इज एबल टू विथस्टैंड ऑल दैट, ओके, इट गिव्स द सेल टू द, इट गिव्स स्ट्रेंथ टू द सेल एज वेल एज इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी। नाउ इट इज, एक सेंटेंस यहाँ पर दिया है, एक वर्ड परमिएबल। परमिएबल मतलब जो भी सॉल्यूट्स वगैरह है, लाइक टेक फॉर एग्जांपल वी ड्रिंक वाटर, सो वाटर विल एंटर इन द सेल, सो इट इज परमिएबल टू सॉल्यूट्स। दीस सेल्स दे आल्सो रिक्वायर फॉर their strength, like you can tell vitamins, minerals, etc. All that it has to pass through the cell wall, so that means it is permeable to solutes, okay, so the cell wall is permeable. Now ये सब organelles एक चीज में होते हैं, that is called cytoplasm. Now this is just, it is helping in the growth, will not go much in detail. जो remaining जो पूरा जो it's a, you can tell
exactly not an organelles, but those organelles, they are present in a medium. That medium is called cytoplasm. Okay, fine. Plasma membrane, again the same thing. It is also called as a cell membrane. It is composed of proteins, composed of phospholipids, carbohydrates, etc. ठीक. Now here थोड़े से organelles जो है हम लोग डिस्कस करेंगे, like ज्यादा तो नहीं, जो really those which are important one. One is, we'll see, one is a ribosome. क्या है ribosome? इसका राइबोसोम का मेन फंक्शन जो है वो प्रोटीन को बनाता है. दैट इज द हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स एंड आरएनए. सो दे आर where the ribosomes are there, they are attached to the endoplasmic reticulum. ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इनफ, इतना ज्यादा डिटेल में तो मैं नहीं जाऊंगा, बट अलबत्ता यूकैरियोट्स में जो है हम लोग देखेंगे कई एक सेल वॉल का हो गया, प्लाज्मा न्यूक्लियस. नाउ न्यूक्लियस जो है अक्सर प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी दोनों में पाया जाता है. न्यूक्लियस यू कैन सी इन द सेंटर न्यूक्लियस रहता है, एंड उसके अंदर जो है न्यूक्लियोलस रहता है. न्यूक्लियोलस. अच्छा, न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है? व्हाट फंक्शन न्यूक्लियस इज हैविंग? जो भी इंफॉर्मेशन सेल को चाहिए वो पूरा न्यूक्लियस में स्टोर्ड होता है. सो ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन इज बीइंग स्टोर्ड, एंड upon its direction it works. Whatever the direction nucleus gives, the cell works on the direction of the nucleus. Now, like what it contains, you can tell it contains DNA. Nucleus में क्या होता है? DNA or all the information necessary for the functioning of the cell. So वो जो है nucleus में होता है. Hence nucleus को क्या कहते हैं? Brain of the cell. Again you can coin a question here. Yes, which part or which organelles is called the brain of the cell? तो उसमें चार ऑप्शंस आ सकते हैं. न्यूक्लियस है, राइबोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक्सेट्रा. So you can tell the nucleus, depending upon the cell, it may occupy in the center, it may occupy the periphery. We'll not go in detail for that, but being the brain of the cell. Which one? The nucleus. Next. Now here, mitochondria, we have to discuss about the mitochondria. Mitochondria cells में, especially eukaryotic cells में रहते हैं. Yes. Now क्या function है mitochondria के? Energy उसे convert करता है, isn't it? It helps, you can tell, it produces energy. अब जब इसको तो energy चाहिए cells को, so that is being helped by the mitochondria. क्या, कैसे energy पैदा करेंगे? जो भी हम खाते हैं, like fats है, carbohydrates, etc., etc. So that gets converted to ATP. ATP is nothing but a form of energy. It converts glucose to ATP. Which one? Mitochondria converts glucose to ATP. Very important. Again, you will get a question on this. Hence, it is called the powerhouse of a cell. It's called the powerhouse of the cell. Now, you can frame a question here. Powerhouse of the cell. Which organelle is called the powerhouse of the cell? Again, you may get four options: ribosomes, Golgi bodies, vacuoles, as well as mitochondria. So never forget, mitochondria is the powerhouse of the cell. ठीक है? Next. Now उसमें भी will not go to each and every detail, but only those which are really important. I'll try to focus on it. Like one more is, you can see the lysosomes. ये भी जो है सेल में रहते हैं, lysosomes. इनका क्या फंक्शन है? इनका फंक्शन मोस्टली प्रोटेक्टिव. कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? एनीथिंग यू टेक इट, सेल में एंटर हो गया, अगर वो वेस्ट है तो उसे एनगल्फ करके फेंक देता है, अगर वो डेंजरस है तो उसको ये मारता है. कौन सा? लाइसोसोम. तो लाइसोसोम्स ये बॉडीज बोल सकते हैं हम, which are protecting ourselves. Okay, which are protecting us. Just for example, I'll tell you one simple example. Any viral infection, कहीं बुखार हो गई, सर्दी हो गए, तो doctor says it's a viral infection. Now what happens? The virus enters our body. Now once it enters our body, then it'll enter even the cell also. Now when this lysosomes senses that ये virus जो है ये बाहर से आया हुआ है,
It's not the content of the cell, it is the something which is coming from outside. Now what it does with all the enzymes it has got, it will kill the virus, isn't it? It will kill the virus, it will engulf it, and उस बॉडी को कहते हैं रेसिडुअल बॉडी. फिर उसके बाद में जो है उसे सेल के बाहर फेंक दिया जाता है. But unfortunately, if the virus is strong, then the lysosomes has to surrender. So just to create an interest, I'm telling. So lysosomes का function क्या है? It will, you can see here, foreign material को it will invade the foreign material. Now foreign material जो भी outside, बैक्टीरिया ले लो, वायरस ले लो, इवन डस्ट ले लो, एंड इवन द सेल्स के अंदर भी जो डेड सेल्स हैं, all that it will engulf it, it will kill it. Hence lysosomes are called suicidal bag. उसे जो है suicidal bag कहा जाता है. ठीक, lysosomes को suicide. Even you may get a question here, the organelles which invade microbes, yes, and kills them. Now you will get 4 options: mitochondria, Golgi bodies, then lysosomes, as well as vacuoles. Then you have to tell that nothing but the lysosomes का function वो है जो कि जो भी organisms, बाहर के जो organisms है, it will kill and then it will throw it out. So lysosomes plays a very important role in our life. Okay, now this part is. The next is again one more. This is a chromosomes. Chromosomes यहाँ पर क्या दिया है? A small colored thread-like structure. You can see in the diagram below. Thread-like structure present in the neoplasm, that is nucleolus of the living cell. That those are called chromosomes. तो उसमें जो है इस तरह के thread-like structure रहता है वो. Where they are present in the nucleus. Nucleus में और एक structure होता है, उसके अंदर ही nucleolus कहते हैं. उसमें जो है आपको क्रोमोसोम मिलता है. अब ये क्रोमोसोम क्या है? Yes, being a thread-like structure present in the nucleolus or the nucleoplasm of the living cell. Now, what function it is having? It which helps in the inheritance or transmission of character in the form of genes. इस chromosomes में बहुत सारे genes present होते हैं. You can see in the diagram, बहुत सारे genes present होते हैं. Okay, see like one. So उसमें भी बहुत सारे classifications है, like an RNA, depending upon the molecules present. We take it as an RNA, ribonucleic acid, DNA, deoxyribonucleic acid, etc. तो इसमें जो है, what function these chromosomes are having, which helps in the transmission of character in the form of genes. तो बाप का हूबहू वैसे ही शक्ल बेटे की है, because of this genes which is present in the chromosome. ठीक है, तो ये है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, विच हेल्प इनहेरिटेंस भी है और ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर. तो अगर आप देखेंगे कि इंडियंस जो है एक पर्टिकुलर फेज के हैं, अमेरिकन्स जो है अलग हैं, आराम से पहचाना जा सकता है कि ये इंडियन है या ये इंडियन नहीं है. व्हाई? ऑल दिस इज बिकॉज ऑफ जीन्स विच इज प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम्स. ओके, दो with an ordinary microscope, it's not, you can't see all that. We require a very advanced microscope. Okay, उसमें जो है again there are classifications of the chromosome. Now इसके बाद जो है इसमें दिया है सेंट्रोसोम्स और सेंट्रियोल्स. उसे एक्चुअली सेंट्रियोल्स कहा जाता है. इसमें ये सेंट्रियोल्स जो है सिलेंडर शेप रहते हैं. I'll try to show you the diagram, whether it's possible or not. Let us see. जी, इसमें आप देख सकते हैं दो सेंट्रियोल्स नजर आ रहे हैं इधर. सो दे आर नथिंग बट एक सिलेंडर टाइप शेप होते हैं ये भी एक ऑर्गेनल्स. इनका क्या फंक्शन है? व्हाट फंक्शन दिस सेंट्रियोल्स आर हैविंग? और अगर ये सेंट्रियोल नहीं है तो क्या नुकसान हो सकता है? यस, व्हाट फंक्शन इट इज हैविंग? दिस सेंट्रियोल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिवीजन ऑफ द सेल. एक सेल से जब मल्टीप्लाई होता है, एक सेल से 2 बनते हैं, 2 से 4 बनते हैं, 4 से 8 बनते हैं. सो ऑल दैट विच मल्टीप्लाइज इज डेफिनेटली बाय द सेंट्रियोल. तो अगर सेल में सेंट्रियोल नहीं है तो आप समझिए कि बस ऑलमोस्ट सेल इज इन द डाइंग स्टेज.
क्यों? इट्स नॉट एबल टू रेप्लिकेट। जितना फंक्शन है, जितनी ताकत है, उतना काम तो करेगा, उसके बाद में जब वो बूढ़ा हो जाएगा सेल, व्हेन इज नॉट एबल टू, देन सेल डिवीजन नहीं होगा, अल्टीमेटली सेल विल डाई। तो जब सेंट्रियोल इज द वन which is responsible for the cell division. Now again you will get a question here. Yes, name the organelles which is responsible for the cell division. Now then you can tell there are example, one is chromosome, then centriole, lysosomes, as well as mitochondria. Never forget, it is the centriole which plays a very vital role in the cell division, okay, for the replication. 2 से 4, 4 से 8, etc. etc. Now again this is the content of chromosome. आप देख रहे हैं ये क्रोमोसोम का कंटेंट है. देन उसमें जो है पर्टिकुलर आरएनए है, डीएनए है, दैट विल बी टू मच फॉर यू, बट स्टिल, सो उसमें जो है न्यूक्लिक एसिड जो है डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए इज ribonucleic acid. Okay, DNA is deoxy. Fine. So this all that they will carry information in the cell. What information? All those they carry genetic information in the cell. उसमें जो है न्यूक्लिक एसिड 4 तरह के होते हैं. यहाँ पर देख सकते हैं आप साइटोसिन, गोनिन, एडेनिन एंड यूरासिल. 4 types of nucleic acid are present here. Okay, will not go in much detail about it. So इसमें जो है आप देख सकते हैं ये एडिन, ये जो इनका जो मॉलिक्यूल किस तरह से फॉर्म होता है. सो प्यूरिन, पिरामिडिन, उसमें जो है प्यूरिन्स में जो है एडेनिन एंड गोनिन आते हैं, एंड पिरामिडिन्स में यूरासिल, थाइमिन एंड साइटोसिन. ओके, सो इन अदर वर्ड्स व्हाट यू कैन टेल इज दे ऑल हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स. ये सब प्रोटीन्स बनाने के लिए मदद करते हैं. ओके, राइट. नाउ हियर आप ये देख लीजिए. आप नेक्स्ट कम अक्रॉस द सेल डिवीजन. व्हाट इज दिस? सेल डिवीजन इज अ मस्ट. बगैर सेल डिवीजन के तो फिर लाइफ का एग्जिस्टेंस प्रॉब्लम हो जाएगा. कैसे? सेल डिवीजन enables organism to grow as well as to reproduce. Now इसमें भी जो है we have got 2 types of cell division. इसमें एक तो कहते हैं माइटोसिस और अनदर कहते हैं मियोसिस. क्या मिलता है इधर? यहाँ पर आप देख सकते हैं माइटोसिस एंड मियोसिस. दिस इज वन टाइप ऑफ सेल डिवीजन and meiosis is another type of cell division. Why we require cell division? Definitely we want cell division for our growth. Okay, now why there are 2 types of cell divisions? Okay, right. इसमें अगर आप देखेंगे एक सेल में yes chromosomes होते हैं. Yes, there are 23 pairs of chromosomes, that is 46 pairs of chromosomes totally. Now इसमें जो है एक parent cell आप देख रहे हैं. Parent cell जाके it will form another, it will replicate here. Okay, this is a replication of again a parent cell. Then in turn this will divide into 2 daughter cells. So in other words what I want to tell is mitosis में जो है division जब होता है तो the end result is 2 daughter cells. Mitosis में 2 daughter cells मिलते हैं. बस एक parent cell से you will get the 2 daughter cells. Of course 20xy जो हम सोचते हैं 46xy, isn't it? 23 pairs like. So we will not go in number of it unnecessary. Again you may get confused. So here mitosis का जो है, mitosis was in such a way that is a division that the end result is you get 2 daughter cells. Simplest way, in a very simple form I'm telling. Now meiosis again the same thing. Parent cells are there. There is replication. In turn they will replicate into 2 and then you get 4 daughter cells. अगर इसमें जो है 46 chromosomes है, yes 46 है, तो the end result will be 23, isn't it? The end result will be 23 chromosomes. So likewise meiosis में जब division होता है तो 4 daughter cells form होते हैं. 4 daughter cells are forming in, so one cell will give rise to ultimately 4 cells. In the simplest form, one cell gives rise to 4 cells. That type of a division is called meiosis. MEIOSIS. उस cells को बोलते हैं
meiosis, whereas एक cell will give rise to two cells. Only one parent cell will give rise to two daughter cells. So that type of division is called mitosis. Okay, mitosis एक meiosis. So again, you may get a question. Name the types of cell division. Okay, so you can tell mitosis as well as meiosis. Okay, these are the type of cell division. Now इसमें जो है अगर ये देखेंगे तो अगर जस्ट टू क्रिएट एन इंटरेस्ट, मियोसिस जो होता है हूबहू इसमें एक तो क्रोमोसोम्स कम हो जाते हैं, ठीक है, हाफ द क्रोमोसोम्स हो गए, ठीक है, लेकिन इसमें इस टाइप ऑफ डिवीजन में देयर इज अ शफलिंग ऑफ जीन्स. थोड़े जीन्स माँ के और थोड़े बाप के मिला के देन द ऑफस्प्रिंग विल बी. अब कई बार हम देखते हैं कि a child doesn't resemble the parents, like neither the mother nor the father. Why? Because of the shuffling of genes. इसमें जो है जीन्स जो है उसे शफल आप देख सकते हैं इधर डायग्राम में, उतना तो क्लियर नहीं है. इसमें देयर इज अ शफलिंग. ये इस सेल से पार्ट ऑफ द जीन्स इज रिमूव्ड, गो टू द अनदर सेल, वहां का जो जीन है इधर आ जाएगा अल्टीमेटली. तो देयर इज अ व्हेन देयर इज अ शफलिंग ऑफ जीन्स that will give rise to again a new production. Okay, such type of division is called meiosis. So meiosis में there is a shuffling of genes, whereas mitosis में genes का shuffling नहीं होता, हूबहू जैसा है वैसा ही बनता है, that is called mitosis. लेकिन जब उसमें changes आते हैं that is called meiosis in a simplest way. Mitosis, one cell will give rise to two cells, whereas meiosis, one cell will give rise to four cells. So this is the difference between mitosis and meiosis, which is a type of cell division. अच्छा, ये जो पार्ट जो है this is a bio molecules. ये mostly it's ये तो पूरा बायोकेमिस्ट्री है, not my field. Anyhow, we'll see later on. अगर हो सके तो कुछ I'll try to simplify it, but right now it's not. I'm not in a position. Now इसमें जो है we can take another type is just take hormones. क्या होता है, what is a hormone? Though it's related to mostly biochemistry, but still we get a part of it, like hormones. Now what are hormones? They are the chemical messengers used in the body by the endocrine system. एक एंडोक्राइन सिस्टम होता है, उसमें एंडोक्राइन जो है सिस्टम में हार्मोन्स जो है डायरेक्टली ब्लड में रिलीज होता है. जो हार्मोन्स ऑर्गन से डायरेक्ट जब ब्लड में रिलीज होता है उसे बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम. एंड जो डक्ट के थ्रू यानी कि थ्रू पाइप्स थ्रू डक्ट के थ्रू जो रिलीज होता है उसे कहते हैं एक्सोक्राइन. ठीक है. नाउ इसमें जो है हार्मोन्स जो है केमिकल मैसेंजर एंडोक्राइन सिस्टम. एंडोक्राइन में अगर आप देखेंगे कई ऐसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स है. सिंपलेस्ट फॉर्म आई विल टेल यू इज थायराइड ग्लैंड. यूजुअली गले में जो होता है थायराइड ग्लैंड, तो वो भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है. ओके. तो वो कई हार्मोन्स रिलीज करता है, T3, T4, TSH, okay, triiodothyronine, etc., etc. Now what are these hormones? They are nothing but the chemical messenger. They are the messengers. So that will, like hypothalamus के बारे में कहते हैं, it's the master gland. hypothalamus जो है वो ब्रेन में होता है, तो वो जो ऑर्डर देता है उस हिसाब से जो है बाकी सब ऑर्गन्स क्या है फंक्शन करते हैं. तो hypothalamus is called as the master. and even नया ये भी है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से भी ऊपर जो है हाइपोथैलेमस होता है. तो इन ऑल इवन ओल्ड बुक्स मेंशन पिट्यूटरी ग्लैंड, न्यू बुक्स मेंशन हाइपोथैलेमस. okay, leave it. So we'll not go in much in detail regarding that. So it is being controlled by the brain, right? Now here they will release certain hormones. Those hormones they will activate these organs to produce. For example, thyroid stimulating hormone. थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है. ओके. ये हार्मोन रिलीज करने के बाद ये जो है थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करता है. नाउ थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करके जो थायराइड हार्मोन्स जो है वो रिलीज होते हैं, लाइक T3, T4, एक्सेट्रा. ओके.
एंड ट्राइडोथेरोन T3 एंड T4। तो उसमें जो है T3 एंड T4 रिलीज होता है। दे आर सो मच इन कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर कि जैसे T3 T4 ज्यादा हो गया तो ऊपर से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम हो जाता है। ओके, एंड रिवर्स हो गया, अगर ये ज्यादा हो गया तो ये कम होता है। तो इस दे आर वर्किंग अंडर coordination with each other, all this hormone. So those chemicals, they are called as the hormones. Now you can see here, hormones are the proteins based chemicals that are secreted by the endocrine glands. Okay, now hormones are chemical messengers that transmit signal from one cell to the other. Right? Okay, then usme again there are many types of it, will not go into detail about it. Now next, इसमें जो हेडिंग भी दिया है रफेज। नो रफेज क्या होता है, और डाइटरी फाइबर, ये सेल्यूलोज होता है। नो दिस सेल्यूलोज, ऑफ कोर्स ये टॉपिक थोड़ा सा बिल्कुल भी हट के हो गया ये रफेज, which cannot be digested by the human intestinal tract. रफेज क्या होता है, इट रिटेन्स वाटर। इसका मेन फंक्शन है, इट इम्प्रूव्स इंटेस्टाइनल फंक्शन बाय एडिंग बल्क टू द फूड। डेफिनेटली लाइक व्हेन वी हैव अ कॉन्स्टिपेशन, so we go for the dietary fibers जिसमें सेल्यूलोज, टेक फॉर एग्जांपल ऑरेंज है, टेक फॉर एग्जांपल कई वेजिटेबल्स जिसमें ज़्यादातर सेल्यूलोज होता है। ओके, जिसमें हम जो बोलते हैं कि फाइबर कंटेंट का ज़्यादा लो, मेनली इट इज द ऑरेंज, राइट। सो दोज कंटेंट्स दे विल improve the water as well as retains water and improves intestinal function. Okay, now इधर यहाँ पर जो है विटामिन, अगेन वी कम ऑलमोस्ट नियरिंग द लाइक द हार्मोन्स। विटामिन्स आर ऑल्सो an organic compound, they are, yes, what for, though they are small in amount, they are required for our health, for our growth as well as for our nutrition, isn't it? आजकल तो ऑलमोस्ट जब भी देखते हैं, एक फॉर एग्जांपल वायरल फीवर हो गया, कोई किसी को बुखार है, फीवर है, तो उसमें विटामिन लाइक कॉमन टैबलेट है बिकॉस जिसे कहते हैं, वो ऐड करिए। क्यों ऐड करते हैं, ठीक है, आप पेशेंट को देते हैं, आप लीजिए, क्यों, इसलिए कि एक तो डेफिसिट हो जाता है, दूसरा दीज विटामिन आर्टिफिशियल विटामिन विल गिव स्ट्रेंथ, तो उसे बूस्ट करता है उसका स्ट्रेंथ। हेंस विटामिन आर रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल हेल्थ, ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन। नाउ आप कहेंगे कि सिर्फ टैबलेट में रहता है क्या? बिल्कुल नहीं, a tablet is an artificial vitamin, so all that you can take in fruits also, you can take, like sunlight का होता है, which one, vitamin D is there. So many types of vitamins are there. There are almost 13 types of vitamins. उसमें जो है 13, which is all are really essential for our growth, all are essential for our health, for the growth, and which require nutrition to our body. Water soluble vitamins A, D, E and K. आप पूछेंगे how many types of vitamins? A है, B है, C है, D, E and K. A, B, C, D, E and K. All these, totally there are 13 types of vitamins. Okay, 13 types of vitamins. उसमें जो है water soluble vitamin, इसका एक definition ही अलग है. Which are the water soluble vitamins? They are called A, D, E and K. Now, just to quote an example, vitamin D, what it does? Yes, in the skin, like especially cholecalciferol from cholesterol, exposure to the sun will give us the vitamin D, यानी कि उस sunlight में जो है vitamin D रहता है. So that again it's called as a sunshine vitamin. Which one? Vitamin D. Okay. Like we take many supplements which helps in the vitamin D, that itself will help in the absorption of calcium. So इस type के हैं. So one example we can give is a vitamin D, जो कि usually after certain age we all go for take calcium वगैरह ले लो, क्यों? क्योंकि vitamin D कम रहने से calcium absorption कम होता है. So all that, they are all interrelated. So you can tell each one vitamin is vital for our living. Vitamin A, night blindness deficiency will cause night blindness. Vitamin D, osteoporosis होता है, etc. etc. like this. Vitamin K will cause liver का जो function है वो that will reduce. So all that like this
many vitamins are there which all play a very important role. Like the vitamins, again there are inorganic nutrients which are called minerals. Okay, now these, for example, calcium hai, phosphorus hai, iron hai, cobalt hai, zinc, all that they fall under the category of the minerals which are again an inorganic nutrients and which require for our body. Right? Yeah. इसमें जो है आपको देख सकते हैं आप, take for example 24 elements body, minerals cannot supply energy, but major minerals like sodium, chloride, potassium, calcium, phosphorus, magnesium, sulfur, etc. Okay, all that is, each mineral has got a specific one. Calcium, which forms almost 97% of the, yes, of the calcium being deposited in the bones, required for our bones, required for the muscles, etc. Phosphorus, again cell के लिए बहुत जरूरत है. Then potassium for our muscle, like we take sodium, we give out potassium. All that potassium कम रहने से भी इंसान को बहुत कमजोरी आ जाती है. It is for the muscular system and for the nervous system we require potassium. आयरन तो बहुत कॉमन है. अगर एनीमिया है, एनीमिया जो व्हाइट कामनी जो बोलते हैं कि भाई बॉडी में बहुत कम है खून, तो उस पेशेंट को आयरन दिया जाता है, IRON, आयरन दिया जाता है. ये भी एक मिनरल है. So that will help in the production of the blood. Okay. So likewise, each mineral has got its own function. Cobalt required for the function of pancreas. Zinc जो है again it promotes immune system. आप देखा होंगे कि जब ये कोरोना वायरस स्प्रेड हुआ था तब उसमें one of the tablets में one of the content was zinc. That definitely boosts our immune system. यानी कि बॉडी को इतना ये ताकत देता है ताकि वो वायरस से लड़ सके. That's called immune system. Okay. Now the last part of it is, again you can take this like bones और teeth के लिए कैल्शियम की जरूरत है. कोफैक्टर, मेटाबॉलिक एंजाइम से मैग्नीशियम की जरूरत है. ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, यानी कि when we inhale the oxygen, then each cell should receive oxygen, that is acting as a nutrient. For that we require an iron, Fe. Then again the K is for potassium. Then zinc will boost the immunity. Yes, chlorides in the hydrochloric acid in the stomach. Then iodine, thyroid hormones जो है वो आयोडीन की कमी से फिर अगेन वी गेट थायरोइडाइटिस, यानी कि थायराइड हार्मोन, थायराइड ग्लैंड बहुत बड़ा हो जाता है बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन. आजकल तो बहुत कमी हो गई क्योंकि सॉल्ट वगैरह में आता है आयोडीन. ऐसे लाइक पी इज फॉर फॉस्फोरस, डीएनए के लिए जरूरत है, बोन्स के लिए जरूरत है. आप देख सकते हैं सोडियम बॉडी फ्लूइड्स एंड पीएच बैलेंस के लिए. ओके, लाइक कॉपर आयरन के लिए, एंजाइम के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो ऐसे जो है रिमेनिंग सेलेनियम, लास्ट का जो है सेलेनियम. सो इस तरह के बहुत सारे मिनरल्स हैं, उसके अलग अलग फंक्शंस होते हैं. ओके, कैल्शियम है, मैग्नीशियम, आयरन, जस्ट एक एटलीस्ट कुछ तो आप you can remember that, like for example iron is there which is meant in the transport of oxygen. Okay, that is required, यानी कि आयरन से ही हमारा खून बढ़ता है, RBCs included. See, calcium that is required, 97% calcium is stored in the bone. Definitely we require a very strong bone for our survival, for our existence, yeah, for our health. You can tell we require a very strong this one. Teeth also is there likewise. So zinc, which definitely boost our immunity, वायरस वगैरह से इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए बल्कि we require zinc. All these are the minerals which are required for our existence. Okay, now so in between I've just left some part of it. I'll try to see whether it's possible or not. I'll try to cover it. This is not in my like biomolecules and all. Let us say now tomorrow what we'll do is we'll start with the system wise. Okay, now the digestive system, all that I will try to cover in the remaining classes allotted to me. Okay, thank you so much. Thank you very much, sir. Thank you very much, Fazal sir. Jazakallah khair. Thank you, sir. Thank you.